In this video, you will learn how to save view for a report with contextual settings, such as with specific masters, period, and comparison of data for multiple companies. The first scenario is saving a view with the selected master. Consider that you are a production manager and track a set of raw materials regularly to take action accordingly to the stock availability. In such a case, it will be convenient if you save the view with those items in the stock group summary. So whenever you need the report, you can use the saved view. Let us see how to do it. Open Stock Group Summary in TallyPrime. Press Alt-G, type or select Stock Group Summary, and press Enter. The Stock Group Summary appears. Click Stock Group or press F4. Select the required group and press Enter. Now press F12 and set Show Goods Inwards, Show Goods Outwards, and Show Closing Balance to Yes. As you can see, the columns for Inwards, Outwards, and Closing Balance have appeared in the report. Now, let us save this view. Click Save View or Ctrl-L. Let us call it Stock Group Summary for Raw Materials. Set Show Additional Configuration as Yes. Let us save this view for this company, which will enable your production supervisors to access the saved view and take necessary actions. Set Save with the master selected to open the report to Yes. Henceforth, every time you open the saved view, it will open for the selected stock group. Press Ctrl-A to save and close the report. Now, press Alt-G. As you can see, all the saved views are listed. Type or select Stock Group Summary for Raw Materials and press Enter. The report opens for the stock group for raw materials that we had selected, and it will be displayed as per the latest data. Now, let us see how to save view for a report in a specific period. Suppose you are an auditor who frequently audits balance sheets in a detailed format with working capital for a specific month. In such a case, you can save a view for balance sheet with the report period. Let us see how to do it. Open Balance Sheet. Press Alt-G, type or select Balance Sheet, and press Enter. Let us set the period as May 2021. Press F2. Enter the from and to dates. You can now view balance sheet for May 2021. Now, press F12, set Format of Report as Detailed, and press Ctrl-A to save. Click Basis of Values or press Ctrl-B. Under List of Configurations, select Include Working Capital and press Enter. Press Ctrl-A to save. Click Save View or press Ctrl-L. Let us name it Balance Sheet for May with Working Capital. Set Show Additional Configuration to Yes. Now, set Save with the selected period to Yes. Subsequently, whenever you will open Balance Sheet with this view, it will open for May 2021. Press Enter and then press Y to accept. Now, press Alt-G, type or select Balance Sheet for May with Working Capital, and press Enter. Balance Sheet opens with the selected view for May 2021. Now let us see how to save a view for a report with multiple columns for different companies or branches. You may want to view profit and loss account report for multiple branches of your company to assess the business. To do so, it is imperative that you load all the companies in TallyPrime. After loading the companies, press Alt-G, type or select Profit and Loss Account, and press Enter.
Now click New Column or simply press Alt-C to add companies. The column details screen appears. Under Name of Company, select the company. Enter the from and to dates as applicable. Then enter currency if needed. Select Method of Stock Valuation and Type of Value to show as per your requirement. For this instance, let us select Default and Actuals under the respective options. Press Ctrl-A to save. Similarly, you can add more columns for other branches. After adding the columns, you can compare the business in the selected branches. Now, save this view. Click Save View or press Ctrl-L. Let's name it Comparative Study of All the Branches. You need to save this view for all companies on this computer as it involves multiple companies. Press Ctrl-A to save and close the report. Now, press Alt-G, type or select Comparative Study of All the Branches, and press Enter. Profit and loss account appears with the respective columns for all the 3 companies, provided the companies used in this report are loaded. As you saw, you can save a view for a report with a range of contextual settings and then seamlessly navigate the view using Go To. This will help you save the scenario-based settings and configuration in a report and then access the view in a matter of seconds whenever required. In this video, you will learn the process of deleting multiple unused stock items in TallyPrime. You might have created some stock items in TallyPrime that are not used in any transaction. Moreover, you may not be selling the stock item in the future too. In such cases, you may want to delete those stock items from your company data. In TallyPrime, you have a facility to delete multiple unused stock items in seconds. However, let us first know the scenarios in which you cannot delete a stock item. There can be 7 scenarios in which you cannot delete a stock item in TallyPrime. 1. Stock item is used in 1 or more transactions. 2. It is linked to cost center, go down or batches. 3. It was created under a stock group. 4. You have provided opening quantity in the stock item. 5. You have included the stock item as a component in bill of materials or BOM and recorded a transaction. 6. The stock item is configured in a voucher class by enabling default accounting allocation for stock item. 7. The stock group is used as a subgroup or main group for a set of groups. Now, let us see how to delete multiple unused stock items in one shot. Open Chart of Accounts from Gateway of Tally. Go to Stock Items and press Enter. As you can see, the stock items are listed here. If one or more scenarios mentioned in Part 1 of the video are applicable to a stock item, then it will not be listed here. Now, click Exception Reports or press Ctrl-J. Press Enter or Show Unused. Now that you have identified the unused stock items, you can select stock items that you want to delete. Press Alt-D. Press Y to accept the deletion. The stock items are deleted. Similarly, you can delete any number of stock items in TallyPrime. Furthermore, you can also delete other unused accounting and inventory masters in TallyPrime from Chart of Accounts. As demonstrated, deleting stock items in TallyPrime is a simple and quick process.
In this video, we will learn about the responsive design of browser reports in TallyPrime Release 2.0. The new design of browser reports will give you native viewing experience in tablet and mobile phone screens. The reports will change and adjust based on the screen size of the device used to view the reports. This will give you a homogeneous and natural experience of report viewing in each device type. Before we look at the reports in a browser, let us see how to give access to browser reports for a company in TallyPrime. First, you have to enable browser access, and then give access to a tally.net user and connect the company for browser access. To enable browser access, press Alt-K and click Features or press F11. In the Company Features Alteration screen, set the option Enable Browser Access to Reports to Yes. Now, to give access to browser reports to a tally.net user, press Alt-K and click Connect. The Security and User Access screen is displayed. In the Email ID for Browser Access field, select the tally.net user ID to whom you want to give access to browser reports from the list displayed. You can even create a new user. Press Enter. The selected tally.net user is given access to browser reports, and the company is connected. You can give access to multiple users also. This can be done from the Users and Passwords menu option under Company, or during connecting the company for the first time. Log in to www.tallysolutions.com using the tally.net user ID from your mobile or a tablet. In the Report screen, click on the company name. The list of reports is displayed. The most commonly used reports are shown at the top, categorized as Common Reports. Select Balance Sheet from the Common Reports. In a mobile, the balance sheet display is modified to appear in vertical format. However, you can just tilt the phone to get the horizontal view. The report quickly readjusts the details in horizontal format. You can also drill down from any group. Let us say the current liabilities. Now, if you want to view details of a different group, you don't have to go back to the report and drill down again. Just use the Quick Access option. Type the group name and select. As you can see, current assets group details are displayed. You can further drill down by selecting a party ledger. Use the Show Details option to check the closing balance. You can collapse or expand the grand total to see more information on the screen. The option to hide or show grand total is available in all reports viewed on mobile. You can further drill down from any month in the Ledger Monthly Summary to view Ledger Voucher Report. You can change period of the report to view details for a different period. The option to change period is different in each device type. In a mobile, you have simplest design that allows you to easily select the day, month, and year. The options to download in Excel and PDF format are grouped together and easily accessible on the screen. To navigate back to the list of reports, just tap on the report title. You are back to List of Reports without having to do multiple back taps. You can search for any other report using the search bar. Tap on the report from the search results. Here we have opened the Profit and Loss Account report. In case you want to view the amount in millions, apply the scale factor. And again, to return to List of Reports, just tap on Report Title. To open Daybook, just search for it and tap on the name. By default, the report opens for last voucher date. If you want to check transactions for previous date, use Date Navigation button.
The date change experience is different in mobile compared to desktop. Tap the report title to navigate back to List of Reports. Now search for Sales Orders Outstanding Report and tap on the name to open it. You can navigate to different sections in the report, like Goods Delivered but Order Not Received. In case you log into browsers using a laptop, you will experience the desktop designs of browser reports. There again, the report layouts, navigation, search are designed for faster access and better viewing of reports in desktop web browsers. Any device you use to view the reports will give a more natural viewing experience rather than force-fitting the reports designed for one layout into the other. In this video, you will learn how to save your preferred view for a report in TallyPrime and use it when needed. You can set your preferred view as the default and see it whenever you open the report. In day-to-day use of TallyPrime, you may be opening a report and configuring it using F12 to view additional values. You may also be changing the report period or applying the valuation method, basis of values, and so on. You may be doing this every time. TallyPrime Release 2.0 brings a delightful feature to save your preferred views with a name of your choice. With this, you can recall your preferred view and open it, thereby saving the time and effort for configuration each time. Moreover, you can alter or delete views whenever required. First of all, let us see how to save a view for a report. Consider the case of tracking your receivables to ensure smooth cash flow in the business. A few of your customers may have delayed their payments, even after their credit period. A few of them might be delaying it until your reminder call. For this, you will use the Bills Receivables report. Open TallyPrime. Press Alt-G, type or select Bills Receivables, and press Enter. The Bills Receivables screen opens. Click Ledger-wise Bills or simply press F8. Press F12 and set Show Opening Amount to Yes, and press Ctrl-A to save the setting. Now, click Aging Method or simply press F6. Under Aging Method, select Aging by Due Date and press Enter. The Company Aging Alteration screen appears. Here, you can enter the aging period based on the credit period you allow. For example, consider that you want to view the bills that are overdue by lesser than 15 days, between 15 and 30 days, and so on. Enter 0 to 15 and press Enter. Now, enter 15 to 30 and press Enter. Similarly, enter 30 to 45 and 45 to 60. Press Ctrl-A to save. You can now see the transactions that are overdue by lesser than 15 days, between 15 and 30 days, and so on. You can include any other factors to set your report as needed. Once you've configured the view, save it. Click Save View or press Ctrl-L. TallyPrime suggests a name, which you can alter as you wish. Let us call it Ledger-wise Bills Receivables - My View. Hereafter, you can use this name to open your receivables report. Let's check how the saved view can be seen. Close the report. Press Alt-G. As you can see, saved views are listed. We can open Ledger-wise Bills Receivables - My View by pressing Enter on it. Alternatively, you can type or select Ledger-wise Bills Receivables - My View and press Enter. You can see that the report appears exactly as you configured. However, if you open Bills Receivables, the original TallyPrime report will open. Now, let us see how to set a view as default. If you are sure that you want to see your preferred view every time you open the report, set it as the default view. For that, click Save View or press Ctrl-L. Set this as default view for the report to Yes.
Press Ctrl-A to save. Close the report. Press Alt-G, type or select Bills Receivables, and press Enter. You can see that the report opens as per the default view that we just set. You can now also view the report in its original form. Click Change View, select Show Original View, and press Enter. As you can see, the report opens in its original view without any settings and configurations. Let us learn how to save for this company or all companies. Press Ctrl-L and set Show Additional Configuration to Yes. You can now view more configurations on the screen. Under Save View For, you may select your preference. Selecting this company will save the view in the company data. Saving the view for this company will enable other users in your network to access this view. This includes users who use the same data, such as data entry operators and accountants. Moreover, your chartered accounts or other stakeholders will be able to access the saved views when you share the data with them. If you generally work on a specific computer and just want to save a view for your reference, then it can be saved for all companies on this computer. Henceforth, you can access the view for any company that is loaded in this application. And if you do not make any selection, the view will be saved for all companies on this computer by default. For this instance, let us select this company with the name Ledgerwise Bills Receivables for sharing. Let us see the views saved for this report. Click Change View or press Ctrl-H. Now, as you can see, the view Ledgerwise Bills Receivables for sharing is saved for this company. You can also set or alter the default view. Let us see how. To set or alter the default view, click Change View or press Ctrl-H. You can see that the saved views are listed, and you can easily identify the views saved for this company and all companies with the help of the labels. Now, select Set/Alter Default View and press Enter. The label Default is appearing alongside the Ledgerwise Bills Receivables -My View that we saved. Select the required view as default and press Ctrl-A to save. Whenever you open the report, the default view will be on the one that is saved for all companies on this computer. Now, let us see how to delete views. To delete a view, press Ctrl-H, then select Delete Saved Views and press Enter. Select the view you want to delete and press Enter. Click Yes or press Y to accept. The view gets deleted. You can also delete all the views at one shot if needed. Click Help or press F1. Go to Troubleshooting and press Enter. As you can see, there are options called Delete Views Saved for All Companies and Delete Views Saved for This Company. Let us delete views saved for all companies. Go to Delete Views Saved for All Companies. Press Enter and then click Yes. All the views saved for all companies will be deleted. However, the view that we just saved for this company will remain intact. Press Alt-G, type or select Ledgerwise Bills Receivables for sharing, and press Enter. In this video, you will learn how to validate HSN or SAC related information online using TallyPrime. You must be furnishing HSN or SAC information in transactions if your business has a turnover exceeding Rs 5 crore in the previous financial year. So, it is important that the information is accurate
so that you do not face any obstacles in the process of filing returns or claiming input tax credit. TallyPrime Release 2.0 onwards, you can quickly validate HSN or SAC information online from within the product. You can do so at the stock item or stock group level, or for multiple stock items in the GST rate setup report. For this, you need to enable GST, along with either e-invoicing or e-way bill at the company level. Furthermore, to validate HSN or SAC using TallyPrime, you need to log in using either e-invoicing or e-way bill credentials based on the feature that is enabled. Both the features are enabled, then you will need to log in with e-invoicing credentials. Let's look at the process of validating HSN or SAC information at the stock item or stock group level. It's recommended to validate the HSN or SAC information during stock item creation. However, you can also do it in the stock item alteration mode. Press Alt-G, go to Alter Master, then select Stock Item, and press Enter. Type or select the stock item for which HSN information needs to be validated, and press Enter. Now, enable Set Alter GST Details. The GST Details for Stock Item screen appears. Press F12 and set Allow HSN SAC Details to Yes, and press Ctrl-A to save. The screen displays HSN SAC details. Press Alt-B or click Get HSN SAC Info. The E-way bill login screen appears. If E-invoice is enabled in the company, then the E-invoice login screen will appear. Enter your username and password. You will remain logged in for the next 6 hours, provided you do not turn off the system you are working on or reset the credentials. Press Enter. As soon as TallyPrime exchanges the information with the portal, Get HSN SAC Info Summary appears. If the HSN code entered in the stock item is correct, then you can see the description and verify the same in the stock item master. You can update in the master if there are any discrepancies. If the HSN code provided in the master is incorrect, Get HSN SAC Info Summary will display the request as rejected with a reason of rejection as invalid HSN code. If description is already entered in the stock item master, then based on that information, TallyPrime will fetch HSN code from the portal. Similarly, you can validate HSN or SAC information at the stock group level. You can also validate HSN or SAC information from the sales or purchase ledger level if you have configured the HSN or SAC details in the ledgers. And if your business involves only one stock item, then you may have entered the HSN SAC details at the company level. In such a case, you may validate HSN SAC information from F11. Now let's see how to do it for multiple stock items at one shot. Press Alt-G, type or select GST Rate Setup, and press Enter. The GST Rate Setup opens, and you can see that the stock items are listed here. Now using spacebar, select the stock items for which you want to validate HSN and SAC related information. Press Alt-B or click Get HSN SAC Info. As you can see, TallyPrime exchanges the information with the E-way bill portal. Thereafter, Get HSN SAC Info Summary appears in which you can see the HSN information. As you can see, TallyPrime facilitates an easy, online process to validate HSN or SAC related information for stock. In this video, you will know how to add digital signature on PDF documents while exporting, emailing, or saving as PDF through print in TallyPrime. Digital signature confirms that the authorized signatory or the person who has printed the signature on the document takes the complete responsibility of its content. With digital signature, a tampered or altered document can easily be identified
as tampering or altering impacts the digital signature. If your business is a company and audited under Section 44AB, then you must already be having a digital signature certificate dongle. However, if you are yet to issue a DSC dongle, then you can get it issued by one of the certifying authorities such as eMudra, Capricorn, SafeScript, PantaSign CA and other authorities. Now let us see how to add digital signature while exporting, emailing or saving as PDF through print in TallyPrime. To use the facility of digital signature in TallyPrime, ensure that your DSC dongle is connected to your laptop or computer. Insert the DSC token or dongle in your laptop or PC. You may want to export vouchers with digital signature. Open any voucher for which you want to add digital signature. Go to Daybook and drill down to the voucher. You can also add digital signature after entering the details. Go to Export, Current or press Ctrl E. Click on F8 File Format and select PDF Read-Only Document from the Export Settings screen. Select the digital signature from the list of digital signature certificates. If you want the TallyPrime system to ask you before adding digital signature every time, then select Yes. The format of signature is only text. Click Send and Yes to sign the voucher digitally. Enter the user PIN and click Login. As you can see, the digital signature is placed above the authorized signatory. Similarly, you can also add the image of the organization's logo, stamp, image of your signature, or any other image relevant to your purpose and include your name with digital signature. To do so, select Format of Signature as Text and Image from the Export Settings screen. Select the image path, image file name, and choose the Include Name of Signatory as Yes. Click Yes to sign the voucher digitally with image. As you see, the digital signature gets added with the image and text above the authorized signatory label. If you have the email ID of your stakeholder, customer, or vendor, then you have a facility to send digitally signed transactions to them via email using TallyPrime. Go to Email and Current. Select your email ID and enter recipient's email ID. Enter subject and email message as needed and click Email. Enter the password. The digitally signed voucher will be sent to the mentioned email. Similarly, you can save the voucher in PDF format by selecting Microsoft Print to print in TallyPrime. To save a voucher in PDF format, click Print, Current. Click Configure, Printer, and select Microsoft Print to PDF from the list of printers. Select Other Details and click Save. You can also select Microsoft Print to PDF file format by pressing F6 Printer from right side button bar. As you can see, the voucher is saved as PDF in your computer. Let's see how to export multiple voucher reports in TallyPrime. You can share multiple voucher reports to a chartered accountant for audit or export multiple transactions for specific period of a customer. The facility of adding digital signature while exporting multiple transactions ensures that all the transactions have a digital signature above the authorized signatory label, which can be seen at the end of each transaction. Open TallyPrime. Click Export Others. The list of reports screen appears. Select the multi-voucher report and press Enter. Click Configure and choose the report details as per your requirement. Click Send to export. All the transactions have a digital signature
above the authorized signatory label, which can be seen at the end of each transaction. And of course, you can add digital signature to any report. As you saw, TallyPrime enables you to add digital signature in transactions or reports during export, email, and save as PDF through print, and imparts authenticity to your documents. इस वीडियो में आप टैलीप्राइम का उपयोग करके ई-वे बिल्स को ऑनलाइन उत्पन्न करना सीखेंगे। जब भी कंसाइनमेंट की रकम 50,000 रुपए या उससे अधिक होगी या फिर आपके राज्य द्वारा निर्धारित रकम से अधिक होगा तो आपको ई-वे बिल जनरेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। टैलीप्राइम रिलीज 2.0 और आगे आप टैलीप्राइम का उपयोग करके ई-वे बिल की गतिविधियां ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपने व्यापार के आवश्यकता अनुसार वाउचर सेव करते समय ई-वे बिल सिस्टम के साथ जानकारी एक्सचेंज करना चुन सकते हैं। ई-वे बिल से संबंधित जानकारी के एक्सचेंज के बाद ई-वे बिल बन जाएगा। उसके बाद आप ई-वे बिल एनेक्शर के साथ सेल्स इनवॉइस प्रिंट कर सकते हैं जिसमें ई-वे बिल संबंधित जानकारी और QR कोड होंगे। एनेक्शर वैसा ही होगा जैसा ई-वे बिल सिस्टम पर उपलब्ध होता है। आप QR कोड में उपलब्ध सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे स्कैन कर सकते हैं और जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। टैलीप्राइम का उपयोग करके ई-वे बिल बनाने से पहले आपको ई-वे बिल सिस्टम पर ई-वे बिल क्रेडेंशियल्स बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। API यूजर क्रिएट करते समय आपको टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को GSP चुनना होगा और आपको टैलीप्राइम में एक सेटअप करना होगा। टैलीप्राइम खोलें और F11 दबाएं। Enable Goods and Services Tax GST पर जाएं और एंटर दबाएं। GST डिटेल्स स्क्रीन दिखेगी। सुनिश्चित करें कि ई-वे बिल एप्लीकेबल ऑप्शंस यस सेट किया हुआ है। बाकी जानकारी भरी हुई होंगी। थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्लूड्स फील्ड के अंतर्गत दी हुई लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से आप आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। गुड्स शिप्ड फ्रॉम में टैलीप्राइम F11 में डिफॉल्ट सेट किया हुआ प्राइमरी एड्रेस दिखाया जाएगा, लेकिन आप वाउचर बनाते समय एड्रेस बदल सकते हैं। प्रिंट ई-वे बिल विद इनवॉइस को यस सेट करें जिससे आप वाउचर सेव करने की तुरंत बाद ई-वे बिल प्रिंट कर सकें। सेटिंग्स को सेव करने के लिए Ctrl A दबाएं। हमने टैलीप्राइम में ई-वे बिल का सेटअप कर दिया है। चलिए एक ई-वे बिल बनाते हैं। Alt G दबाएं, क्रिएट वाउचर में जाएं और एंटर दबाएं। अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन दिखेगी। सेल्स क्लिक करें या F8 दबाएं। निश्चित करें कि आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में नहीं हैं। पार्टी अकाउंट नेम में पार्टी सेलेक्ट करें। डिस्पैच डिटेल्स स्क्रीन खुलेगी। सारी फील्ड्स में आवश्यक उपयुक्त जानकारी एंटर करें। एंटर दबाएं और पार्टी डिटेल स्क्रीन दिखेगी। पार्टी लेजर में प्रदान की हुई जानकारी के अनुसार यहां जानकारी पहले से भरी होगी। एंटर दबाएं। अब सेल्स लेजर चुनें और एंटर दबाएं। आइटम चुनें। क्वांटिटी एंटर करें। रेट पहले से भरा हुआ होगा। आप एंटर कर सकते हैं। क्वांटिटी और रेट के अनुसार अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। आप और आइटम्स एंटर कर सकते हैं। SGST और CGST के लेजर्स चुनें यदि यह ट्रांजैक्शन
राज्य के अंतर्गत है, लेकिन अगर पार्टी किसी और राज्य में स्थिति है तो IGST लेजर चुनें। 2 बार एंटर दबाएं और कर्सर प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल्स पर पहुंचेगा। विकल्प को यस सेट करें। एडिशन डिटेल्स सेल्स टैक्सेबल स्क्रीन दिखेगी। इस स्क्रीन में प्रदान की हुई जानकारी के अनुसार ई-वे बिल बनेगा। कंपनी और पार्टी लेजर में प्रदान किए नए एड्रेस के अनुसार डिस्पैच फ्रॉम और शिप टू जानकारी पहले से भरी हुई होगी। अब डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंटर करें। यह कंजाइनर और कंजाइनी के एड्रेस के बीच का डिस्टेंस है। आपके ई-वे बिल की वैलिडिटी इस फील्ड में एंटर किए हुए डिस्टेंस पर निर्धारित होती है। अगली बार जब भी आप इस पार्टी के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो पार्टी लेजर के प्रदान किए हुए एड्रेस और पिन कोड के अनुसार डिस्टेंस का फील्ड पहले से भरा हुआ होगा। ट्रांसपोर्टर नेम चुनें। आप इसे नन सेट कर सकते हैं यदि आप अपना या भाड़े पे लिया हुआ व्हीकल या फिर रेलवेज, एयर या शिप से कंसाइनमेंट भेज रहे हैं। अभी ट्रांसपोर्टर नेम चुनते हैं। ट्रांसपोर्टर द्वारा प्रदान किए हुए ट्रांसपोर्टर आईडी एंटर करें। उसके बाद यदि आपके पास पार्ट बी से संबंधित जानकारी है तो आप पार्ट ए के साथ पार्ट बी डिटेल्स भी प्रदान कर सकते हैं। मोड में लिस्ट ऑफ मोड्स में से चुनें। चलिए रोड चुनते हैं। अब व्हीकल नंबर और डेट एंटर करके व्हीकल टाइप चुनें। अगर चाहें तो आप नरेशन एंटर कर सकते हैं। सेव करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं और आपको ई-वे बिल बनाने के लिए एक कंफर्मेशन स्क्रीन दिखेगी। एक्सेप्ट करने के लिए Y दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ई-वे बिल लॉगिन स्क्रीन खुलती है। अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें। यदि आप सिस्टम बंद या क्रेडेंशियल्स रीसेट नहीं करते तो अगले 6 घंटे तक आप लॉग्ड इन रहेंगे। एंटर दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टैली प्राइम ई-वे बिल सिस्टम के साथ जानकारी का एक्सचेंज कर रहा है। जानकारी का लेन देन संपूर्ण होने के बाद एक कंफर्मेशन मैसेज दिखेगा। उसके बाद इनवॉइस का प्रीव्यू दिखेगा। पेज डाउन दबाकर आप बनाए हुए ई-वे बिल को QR कोड और संबंधित जानकारी के साथ देख सकते हैं। इसके अलावा एडिशनल डिटेल स्क्रीन में ई-वे बिल नंबर और वैलिडिटी डेट अपडेट हो जाएंगे। चलिए अब ई-वे बिल के लिए उपलब्ध और कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय ई-वे बिल थ्रेशोल्ड लिमिट को ओवरराइड कर सकते हैं। मोर डिटेल्स क्लिक करें या कंट्रोल आई दबाएं, शो मोर चुनें और एंटर दबाएं। ई-वे बिल एप्लीकेबिलिटी पर जाएं और एंटर दबाएं। अब जनरेट ई-वे बिल बाय इग्नोरिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट को यस सेट करें। अब से यदि इनवॉइस की रकम थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि 50,000 रुपए से कम होगा तो भी आप ई-वे बिल बना पाएंगे। आप आपके लिए आवश्यक जानकारी के अनुसार भी ई-वे बिल कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। F12 दबाएं और कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन दिखेगी। यदि कंसाइनमेंट के लिए एक से अधिक ई-वे बिल्स है और आप सारे ई-वे बिल्स की जानकारी इनवॉइस में दिखाना चाहते हैं तो शो कंसोलिडेटेड ई-वे बिल नंबर एंड डेट को यस सेट करें।
शो सब टाइप को यस सेट करके आप किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है वो प्रिंट में दिखा सकते हैं। वो सप्लाई एक्सपोर्ट या आपके कंसाइनमेंट के अनुसार कोई भी हो सकता है। शो डॉक्यूमेंट टाइप को यस सेट करें। इससे आप ई-वे बिल पर डॉक्यूमेंट टाइप जैसे कि टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई या ट्रांजैक्शन के उपयुक्त प्रिंट कर सकते हैं। यदि आप कंसाइनर और कंसाइनी की जानकारी ई-वे बिल पर प्रिंट करना चाहते हैं तो शो कंसाइनर डिटेल्स फ्रॉम और कंसाइनी डिटेल्स टू को यस सेट करके एंटर दबाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एडिशनल डिटेल स्क्रीन में और फील्ड्स ऐड हो गई है। जानकारी एंटर करें और कंट्रोल ए दबा के सेव करें। उपयुक्त सब टाइप और डॉक्यूमेंट टाइप चुनें और कंसाइनर एवं कंसाइनी डिटेल्स पार्टी लेजर में प्रदान की हुई जानकारी के अनुसार पहले से भरे हुए होंगे। यदि आप चाहें तो बदल सकते हैं। आप कंट्रोल ए दबाएं। कंफर्मेशन स्क्रीन दिखेगी। ई-वे बिल बनाने के लिए Y दबाएं। टैली प्राइम ई-वे बिल सिस्टम के साथ जानकारी एक्सचेंज कर रहा है। जैसे कि आपने देखा, टैली प्राइम रिलीज 2.0 से आपके लिए QR कोड और ई-वे बिल संबंधित सारी जानकारी के साथ ई-वे बिल बनाने के लिए एक ऑनलाइन इस वीडियो में हम वे परिस्थितियां समझेंगे जिसमें जीएसटी अपने आप कैलकुलेट नहीं हो पाता। हम इसके कारण को पहचान कर भूलों को सही करने की प्रक्रिया भी समझेंगे। टैली प्राइम को इस तरह बनाया गया है कि मास्टरों में एंटर किया हुआ टैक्स रेट और टैक्स से संबंधित अन्य जानकारियों के आधार पर इनवॉइस में जीएसटी अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। जब भी किसी वाउचर में कोई भी दो मास्टरों में एंटर की हुई टैक्स की जानकारी में बेमेल हो या टैक्स की जानकारी एंटर ही नहीं की हो तो टैली प्राइम जीएसटी कैलकुलेट नहीं करता है। टैली प्राइम इनवॉइस में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए विभिन्न मास्टरों में जीएसटी की जानकारी की जांच करता है। जब एक से अधिक मास्टर में जीएसटी की जानकारी होती है तब टैली प्राइम टैक्स लगाने के लिए मास्टरों को पदानुक्रम प्राथमिकता देता है। सबसे अधिक प्राथमिकता वाउचर में एंटर की हुई जानकारी को मिलती है, उसके बाद लेजर में एंटर की गई और सबसे कम कंपनी के F11 में एंटर की हुई जानकारी को मिलती है। यदि आप ट्रेडिंग या उत्पादन के व्यापार में हैं तो टैक्स की जानकारी या गैर हाजिर जानकारी के बेमेल से बचने के लिए जीएसटी रेट स्टॉक आइटम में कॉन्फ़िगर होने चाहिए। और यदि आप सर्विस के व्यापार में हैं और इन्वेंट्री का उपयोग नहीं करते तो लेजर मास्टर में कॉन्फ़िगर होने चाहिए। चलिए कुछ ऐसी परिस्थितियां समझते हैं जिसमें टैली प्राइम जीएसटी कैलकुलेट नहीं करता। हम टैली प्राइम में उपलब्ध ऐसे सुविधाओं पर भी नजर डालेंगे जो आपको मसले को पहचानने में और सही करने के काम आएंगे। उसके बाद हम हमेशा के लिए ऐसा समस्याओं का हल करना सीखेंगे। पहला मामला जिसमें टैली प्राइम वाउचर में जीएसटी कैलकुलेट नहीं करता वह तब होता है जब वाउचर के मास्टरों में जीएसटी के कैलकुलेशन करने के लिए आवश्यक जानकारी ही ना हो। चलिए एक वाउचर बनाते हैं। पार्टी चुनें और पार्टी डिटेल्स में दी हुई जानकारी को एक्सेप्ट करें। चुनी हुई पार्टी और आपकी कंपनी का राज्य समान है। सेल्स लेजर चुनें। स्टॉक आइटम्स चुनें।
पार्टी समान राज्य की है तो CGST और SGST के लेजर को चुनें। जैसा कि आप देख रहे हैं, टैली प्राइम GST कैलकुलेट नहीं कर रहा। आपको वाउचर बनाना है और इसीलिए आप जानना चाहेंगे कि GST कैलकुलेट क्यों नहीं हो रहा है। वाउचर में चुने हुए किसी भी मास्टर में GST रेट या टैक्स टाइप कॉन्फ़िगर नहीं किया है। टैली प्राइम में एक विशिष्ट रिपोर्ट है जो आपको ऐसे मामले में सहायता करेगा। इस रिपोर्ट में आपको किसी वाउचर से संबंधित GST की विगत मिलेगी, उपयुक्त GST और कैलकुलेट हुए GST की जानकारी मिलेगी और आपको यह भी पता चलेगा कि वाउचर में GST क्यों कैलकुलेट नहीं हो रहा। चलिए GST टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट को खोलते हैं। Alt+A दबाएं या रिलेटेड रिपोर्ट्स क्लिक करके GST टैक्स एनालिसिस खोलें। इसका मतलब यह है कि टैली प्राइम टैक्स रेट और टैक्स टाइप की जानकारी की अनुपस्थिति के कारण वाउचर में GST कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। आपको अब कारण पता है तो आप आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता अनुसार लेजर या स्टॉक आइटम खोलें और टैक्स संबंधित जानकारी कॉन्फ़िगर करें। जानकारी कॉन्फ़िगर होते ही टैली प्राइम वाउचर में GST कैलकुलेट करता है। अगला उदाहरण जिसमें GST कैलकुलेट नहीं होता वह है जब आप CGST और SGST की जगह IGST चुन लेते हैं या उसका विपरीत। यह तब होता है जब आपको लेजर में सेट किए हुए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की जानकारी नहीं होती है। इस सेल्स लेजर में नेचर डिफॉल्ट रूप में इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल चुना हुआ है। चलिए देखते हैं वाउचर बनाते समय किस प्रकार की गलती हो सकती है। सेल्स इनवॉइस में पार्टी चुनें। जिस सेल्स लेजर में नेचर को इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल सेट किया गया है उसे चुनें। इनवॉइस में टैक्स कैलकुलेट करते समय सेल्स लेजर में सेट किए हुए टैक्स रेट और नेचर को सबसे अधिक प्राथमिकता मिलती है। आइटम्स को चुनें। अब आप CGST और SGST को चुनते हैं क्योंकि अधिकतर वाउचर लोकल सेल्स के होते हैं और आपको पता नहीं है कि सेल्स लेजर में कौन सा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेट किया हुआ है। GST कैलकुलेट न हो पाने का कारण जानने के लिए GST टैक्स एनालिसिस में जाएं। Alt+A दबाएं या रिलेटेड रिपोर्ट्स पर क्लिक करके GST टैक्स एनालिसिस खोलें। यहाँ आप देख सकते हैं कि टैली प्राइम इंटरस्टेट सेल्स के लिए टैक्स कैलकुलेट कर रहा है परंतु वाउचर में लागू नहीं हुआ है क्योंकि IGST टैक्स लेजर नहीं चुना है। टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट कर रहा है परंतु वाउचर में लागू नहीं कर रहा, जिसके कारण एज पर ट्रांजैक्शन फील्ड खाली है। आप नोट भी देख सकते हैं जो आपको नेचर और प्लेस ऑफ सप्लाई के बेमेल की जानकारी देता है। टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको वह सेल्स लेजर चुनना होगा जो लोकल सेल्स टैक्सेबल के लिए कॉन्फ़िगर किया हो क्योंकि पार्टी समान राज्य से है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं CGST और SGST के मूल्य दिख रहे हैं। आप कैलकुलेट की हुई और लागू टैक्स का मूल्य जानने के लिए GST टैक्स एनालिसिस दोबारा खोलकर देख सकते हैं। अगला परिदृश्य जिसमें टैली प्राइम GST कैलकुलेट नहीं करता वह तब होता है जब वाउचर बनाते समय प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लीमेंट्री डिटेल्स में बदल दिया जाता है। चलिए देखते हैं यह गलती कैसे हो सकती है। सेल्स इनवॉइस में पार्टी चुनें। पार्टी डिटेल स्क्रीन में प्लेस ऑफ सप्लाई बदलें। प्लेस ऑफ सप्लाई में परिवर्तन के कारण पार्टी अब इंटरस्टेट हो जाती है। अब आप वह सेल्स लेजर चुनें
जो लोकल टैक्सेबल सेल्स के लिए लागू है। आपको पता नहीं है कि सेल्स लेजर में लोकल सेल्स के लिए टैक्स सेट किया है। आइटम या आइटम्स चुनें। अब आप IGST टैक्स लेजर चुनें क्योंकि आपने प्लेस ऑफ सप्लाई लोकल से इंटरस्टेट किया है। टैक्स का मूल्य कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है। इनवॉइस में GST कैलकुलेट न होने का कारण जानने के लिए GST टैक्स एनालिसिस में जाएं। Alt-A दबाएं या रिलेटेड रिपोर्ट्स क्लिक करके GST टैक्स एनालिसिस खोलें। यहाँ आप देख सकते हैं टैली प्राइम इसे लोकल सेल्स सौदा मान रहा है क्योंकि सेल्स लेजर में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स टैक्सेबल कॉन्फ़िगर किया है। अतः वाउचर में टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है क्योंकि पार्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई लोकल से इंटरस्टेट में बदल दिया गया है। टैली प्राइम टैक्स तो कैलकुलेट कर रहा है परंतु वाउचर में लागू नहीं कर रहा, जिससे एज पर ट्रांजैक्शन फील्ड खाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टैली प्राइम आपको वाउचर में टैक्स लागू न होने का कारण एक नोट के जरिए बताता है। अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और प्लेस ऑफ सप्लाई के बीच कोई बेमेल हो तो आपको पता चल जाएगा। सौदे के प्रकार पर आधारित इस समस्या को हल किया जा सकता है। यदि पार्टी का प्लेस ऑफ सप्लाई भूल से बदल गया था तो आप वास्तविक प्लेस ऑफ सप्लाई में बदल सकते हैं। अब आप CGST और SGST चुन सकते हैं और टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट करके लागू करेगा। यदि प्लेस ऑफ सप्लाई जान के बदला गया था तो आप सेल्स लेजर बदल सकते हैं और इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ लेजर चुन सकते हैं। उसके बाद आप IGST टैक्स लेजर चुनेंगे तो टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट करेगा। अगला उदाहरण जिसमें GST कैलकुलेट नहीं हो पाता है वह तब होता है जब आप वाउचर बनाते समय नेचर को ओवरराइड कर देते हैं। जैसा कि आपको पता है, आप एक सेल्स लेजर को एक विशिष्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के साथ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ताकि वह एक विशिष्ट प्रकार के सेल्स के लिए बनाए वाउचर में इस्तेमाल हो सके, जैसे कि लोकल सेल्स के लिए सेल्स टैक्सेबल और बाहरी राज्यों की पार्टियों से संबंधित सेल्स के लिए इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल। अगर आपने सेल्स लेजर में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कॉन्फ़िगर कर दिया है और आप नेचर को एक वाउचर के लिए बदलना चाहते हैं तो टैली प्राइम में आप ऐसा कर सकते हैं। परंतु यदि आप नेचर के उपयुक्त टैक्स लेजर नहीं चुनेंगे तो नेचर में परिवर्तन के कारण GST कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आप नेचर को लोकल से इंटरस्टेट में बदलेंगे तो आपको CGST और SGST की जगह IGST लेजर चुनना पड़ेगा और उसका विपरीत परिदृश्य जिससे टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट कर सके। देखते हैं यह गलती कैसे हो सकती है। सेल्स इनवॉइस में F12 दबाएं और मॉडिफाई टैक्स रेट डिटेल्स ऑफ GST विकल्प को यस सेट करें। इससे आप सेल्स लेजर में पहले से सेट किए हुए टैक्स रेट और नेचर को वाउचर बनाते समय बदल पाएंगे। Ctrl-A दबाकर बदलाव एक्सेप्ट करें। पार्टी चुनें। सेल्स लेजर चुनें जिसमें नेचर लोकल सेल्स सेट है। GST क्लासिफिकेशन डिटेल स्क्रीन में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को सेल्स टैक्सेबल से इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल में बदलें। आदत या गलती से आप CGST और SGST चुनते हैं। टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट नहीं करता। आप GST टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि टैली प्राइम इंटरस्टेट सेल्स नेचर के लिए टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, इसीलिए वाउचर में CGST और SGST के मुताबिक टैक्स लागू नहीं हो रहा है। आप नोट में देखेंगे जिसमें
वाउचर में जीएसटी कैलकुलेट न होने का विशिष्ट कारण दिया हुआ है। इसमें भी आप दो चीजें कर सकते हैं। सीजीएसटी और एसजीएसटी की जगह आईजीएसटी टैक्स लेजर चुनें, या फिर यदि नेचर को गलती से बदला गया था तो आप वापस नेचर को पूर्व स्थिति में लौटाकर लोकल सेल्स टैक्सेबल रख सकते हैं। जब आप F11 कंपनी जीएसटी डिटेल्स में एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी विकल्प को यस सेट करते हैं तो सारे वाउचर्स डिफॉल्ट रूप से इंटरस्टेट माने जाते हैं और हर टैक्सेबल वाउचर में आईजीएसटी लागू होता है। परंतु यदि आप ऐसी कंपनी में वाउचर बनाते समय सीजीएसटी और एसजीएसटी टैक्स लेजर्स चुनते हैं तो टैली प्राइम टैक्स कैलकुलेट नहीं करता, और जब आप जीएसटी टैक्स एनालिसिस में जाते हैं तो आप देखते हैं कि टैक्स इंटरस्टेट सेल्स के लिए कैलकुलेट हुआ है क्योंकि आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी लेजर चुने थे। वाउचर पर टैक्स लागू नहीं हो पाया। इसको हल करने के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी के लेजर्स हटाएं और आईजीएसटी लेजर चुनें। टैली प्राइम आईजीएसटी लागू करके वाउचर में दिखाएगा। एक और मामला जिससे वाउचर में जीएसटी कैलकुलेट नहीं होता है वह होता है जब नॉन जीएसटी सप्लाई चुना होता है। ये एक सेल्स लेजर जिससे आईएस नॉन जीएसटी गुड्स को यस सेट किया है। यह विकल्प तभी आता जब जीएसटी डिटेल स्क्रीन के F12 में सेट टाइप ऑफ गुड्स इनेबल्ड होता है। इसका मतलब है जिस वाउचर में यह सेल्स लेजर चुना जाएगा उसमें जीएसटी लागू ही नहीं होगा। आप इसे स्टॉक आइटम मास्टर में भी सेट कर सकते हैं। इस मामले में उस विशिष्ट आइटम पर जीएसटी कैलकुलेट नहीं होगा। जब आप एक ऐसा सेल्स लेजर या स्टॉक आइटम वाउचर में चुनते हैं और उसके बाद टैक्स लेजर्स चुनकर जीएसटी लागू करने का प्रयत्न करते हैं तो टैली प्राइम टैक्स लागू नहीं करता है। आप जीएसटी टैक्स एनालिसिस स्क्रीन देख सकते हैं। उसमें आप देखेंगे कि टैक्स आइटम्स के लिए कैलकुलेट नहीं हुआ है। आप वाउचर से टैक्स लेजर्स निकाल सकते हैं क्योंकि यह नॉन जीएसटी सेल है या यदि इसमें टैक्स लागू होना चाहिए तो आइटम मास्टर में ऑटो कैलकुलेशन के लिए ड्यू डेट एंटर करके टैक्स की जानकारी कॉन्फ़िगर करें। हालांकि यहाँ जीएसटी लागू करते समय होने वाली गलतियां हैं और उनका कारण और हल बताया गया है। आप अपने व्यापार की व्यवस्था के अनुसार मास्टरों में ही जीएसटी संबंधित जानकारी कॉन्फ़िगर करके गलतियों से बच सकते हैं। टैली प्राइम काफी लचीला है और आपको जीएसटी की जानकारी कंपनी में, लेजर में, स्टॉक आइटम्स में या फिर सीधा वाउचर में कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। आप जीएसटी की जानकारी कंपनी में सेट कर सकते हैं यदि कंपनी में समान HSN कोड और जीएसटी रेट वाली स्टॉक आइटम्स का लेन देन होता है। इससे आप एक ही जगह सारी जानकारी सेट कर सकते हैं और टैली प्राइम वाउचर में उसी जानकारी पर आधारित टैक्स लागू करेगा। इन जानकारियों को किसी और मास्टर में सेट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बाकी जीएसटी संबंधित जानकारी एंटर करनी पड़ेगी जैसे कि पार्टी का GSTIN इत्यादि पर आइटम्स की जानकारी नहीं एंटर करनी पड़ेगी। आप जीएसटी की जानकारी स्टॉक ग्रुप में भी सेट कर सकते हैं यदि आपको बिजनेस में उपयोग में आने वाली कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनका HSN कोड और जीएसटी रेट्स समान है। आप हर ग्रुप के लिए भिन्न स्टॉक ग्रुप बनाकर भी स्टॉक ग्रुप मास्टर में जीएसटी की जानकारी सेट कर सकते हैं। अब आप वाउचर में आइटम चुनते हैं। टैली प्राइम स्टॉक ग्रुप में दी हुई टैक्स संबंधित जानकारी लागू करता है। यदि टैक्स से संबंधित जानकारी कंपनी
और स्टॉक ग्रुप दोनों की जगह कॉन्फ़िगर की है तो वाउचर में टैक्स लागू करते समय स्टॉक ग्रुप में दी हुई जानकारी को प्राथमिकता मिलेगी। उसी तरह यदि आपके बिजनेस में वैसी आइटम्स का उपयोग होता है जिनका HSN कोड और टैक्स रेट अलग है तो स्टॉक आइटम्स में GST की जानकारी कॉन्फ़िगर करें। इससे सुनिश्चित होगा कि हर आइटम पर लागू हो रही टैक्स की जानकारी सही है। तीनों मामले में आपको अकाउंटिंग लेजर में टैक्स की जानकारी सेट नहीं करनी है। यदि अकाउंटिंग लेजर्स जैसे कि सेल्स लेजर या परचेस लेजर में टैक्स की जानकारी सेट की है तो उस जानकारी को कंपनी, ग्रुप और स्टॉक आइटम्स में दी हुई जानकारी से अधिक प्राथमिकता मिलेगी। यदि आप सेल्स लेजर में GST की जानकारी को सेट करते हैं तो वाउचर में चुनी हुई सारी आइटम्स पर टैक्स की जानकारी लागू हो जाती है। आइटम मास्टर में टैक्स की जानकारी सेट होने के बावजूद भी ऐसा होता है। आप सेल्स लेजर में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी चुन सकते हैं। जब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग लेजर जैसे कि सेल्स या परचेस लेजर में सेट होता है तो पार्टी मास्टर में सेट किया हुआ प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं माना जाता, बल्कि अकाउंटिंग लेजर में सेट किए हुए नेचर का उपयोग कर लोकल या इंटरस्टेट GST लागू होता है। इस जानकारी की आधार पर आप अपने टैक्स की जानकारी सेट करें और आपको वाउचर में GST न कैलकुलेट होने वाली समस्या कभी नहीं हो। इस वीडियो में हम लाइसेंस के गेटवे सर्वर को एक कंप्यूटर से दूसरे में बदलने की प्रक्रिया समझेंगे। आप टैली प्राइम को किसी दूसरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके अपना लाइसेंस रीएक्टिवेट कर सकते हैं। टैली प्राइम के साथ लाइसेंस गेटवे सर्वर भी दूसरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है। आपको अपने कंप्यूटर में लाइसेंस सरेंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीएक्टिवेट करने पर लाइसेंस खुद ब खुद सरेंडर हो जाता है। जब आप दूसरे कंप्यूटर में लाइसेंस रीएक्टिवेट करेंगे तब आपको मैसेज आएगा, यस क्लिक कीजिए और लाइसेंस रीएक्टिवेट हो जाएगा। सारे टैली क्लाइंट कंप्यूटर्स जहां यहां गेटवे सर्वर चल रहा था उन पर लाइसेंस एजुकेशनल मोड में चले जाएगा। लैन पर चल रहे क्लाइंट कंप्यूटर्स भी लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। आप टॉप मेन्यू में F1 हेल्प में जाएं, उसके बाद लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क चुनें। गेटवे सर्वर नेटवर्क में उपलब्ध सारे इस वीडियो में हम लाइसेंस के गेटवे सर्वर को एक कंप्यूटर से दूसरे में बदलने की प्रक्रिया समझेंगे। आप टैली प्राइम को किसी दूसरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल करके अपना लाइसेंस रीएक्टिवेट कर सकते हैं। टैली प्राइम के साथ लाइसेंस गेटवे सर्वर भी दूसरे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो जाता है। आपको अपने कंप्यूटर में लाइसेंस सरेंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीएक्टिवेट करने पर लाइसेंस खुद ब खुद सरेंडर हो जाता है। जब आप दूसरे कंप्यूटर में लाइसेंस रीएक्टिवेट करेंगे तब आपको मैसेज आएगा, यस क्लिक कीजिए और लाइसेंस रीएक्टिवेट हो जाएगा। सारे टैली क्लाइंट कंप्यूटर्स जहां यहां गेटवे सर्वर चल रहा था उन पर लाइसेंस एजुकेशनल मोड में चले जाएगा। लैन पर चल रहे क्लाइंट कंप्यूटर्स भी लाइसेंस का उपयोग कर सकते हैं। आप टॉप मेन्यू में F1 हेल्प में जाएं, उसके बाद लाइसेंस, मैनेज लाइसेंस, यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क चुनें। गेटवे सर्वर नेटवर्क में उपलब्ध सारे लाइसेंसों की सूची दिखाएगा। सर्वर चुनें और कनेक्ट करने के लिए एंटर दबाएं।
In this video, you will learn how to configure printing and print bank details and logo on your invoices. First, let us learn the print configurations. You may need to configure the print of an invoice or report in TallyPrime. For example, you may want to show the HSN details in the print of an invoice. Let's see how to do it. Press Ctrl P and then C. As you can see, all the configurations are listed here. Press on Show More if needed. Type or select Show HSN SAC details and press Enter to set it as Yes. Subsequently, HSN SAC details can be seen in the preview. Press Ctrl P and then P. Similarly, you can quickly type or select configurations applicable for the print of invoices or reports to fulfill any requirement relevant to your business. Now, let us see how to print bank details and logo on invoices recorded in TallyPrime. You may want to print bank details on the invoices. While on the print configuration screen, type or select Show Bank Details and set it to Yes by pressing Enter. Then you can select bank name as applicable. You can also set one as default. Once you do that, you can select the information that you want as a part of bank details as per your requirement. Thereafter, see the preview and you will observe that the bank details are part of the invoice. For printing logo, while on the print configuration screen, type or select Include Company Logo applicable to print export email and set it to Yes by pressing Enter. The company details screen appears. Then you need to specify the image path. Select image path and image file name based on the location where you have saved the company logo with a name in your computer. Now let's see the preview of the invoice. As you can see, the logo is a part of the invoice print. It is important to note that TallyPrime supports only JPEG and BMP file formats for logos. As you know, configuring print in TallyPrime is very simple and the configurations can be explored across invoices and reports with ease. Furthermore, you can print your bank details and company's logo if required. In this video, you will understand the pattern and behavior of buttons in TallyPrime and how to use these buttons to perform certain actions across transactions and reports. Tally brings in new features with each release. This leads to an addition of multiple actions which require more buttons to enable you perform the related actions. In TallyPrime, there are buttons using which you can perform multiple actions. You can press the visible shortcut key of the button to perform one action. And you can also press Ctrl and Alt keys and the respective key to perform other actions. Alternatively, you have an option to click the buttons or the arrow key provided adjacent to the buttons to perform the action as per your requirement. You can observe that the action with single underline is to be used in combination with Alt and that with double underline is to be used in combination with Control. To understand more, let's take an example. You want to view daybook in the detailed format? Open daybook. Press Alt G, type or select daybook and press Enter. As you can see, there are buttons in the right button bar and bottom button bar to help you perform the respective actions. Press Ctrl. As you can see, other buttons have appeared and you can also view the keyboard shortcuts for the buttons. Similarly, when you press Alt, you can view more actions under buttons. For instance, to view the report in the detailed format, press Alt F5. Daybook is displayed in the detailed format. Press Alt again
you can see that the action condensed has appeared. While the shortcut key Alt F1 to view a report in the detailed or condensed format is retained, the action is provided under F5 in the right button bar. Let's take another example to understand button behavior in TallyPrime. You may want to view ledger-wise debit and credit amount for sales vouchers. Press F4, type or select all sales voucher and press enter. The list of all sales voucher appears. Press Alt and you can perform the actions that have appeared on the screen. You can see the action extract against F8. So, press Alt F8 to view the debit amount and credit amount for ledgers. Alternatively, you can also click the arrow key adjacent to F8 and then click Extract. Let's take another example of surrendering license in TallyPrime. Press F1, Settings, License, Manage License, and then press Enter. The license information screen appears. You can see that the F7 button is inactive. Click the arrow key adjacent to the button and you can view the surrender option. As you can see, even the visibly inactive buttons have actions. These actions can be performed using the arrow key or combination of the key with Ctrl or Alt as applicable. Press Ctrl F7. You can then proceed and surrender the license. Some other examples of the actions grouped under a button are basis of valuation and go down type in the stock summary report clubbed under the F8 key. If you press Ctrl F8 in stock summary, you will be able to use the go down type option. In the voucher creation, you can observe that multiple voucher types are clubbed under a button based on their contextual usage. Receipt, credit note and rejections are clubbed under F6. Similarly, journal, stock journal and physical stock are clubbed under F7. As you saw, the way actions are grouped under buttons in TallyPrime. While the grouping of buttons enable a clutter-free experience, it brings consistency to the behavior of buttons across transactions and reports, which helps you learn faster. In this video, you will understand the process of viewing edit logs for transactions and masters in TallyPrime Edit Log. Your business may be falling under the purview of Audit Trail Compliance Requirement implemented by the Ministry of Corporate Affairs or MCA from April 1st, 2022. As per the compliance, it is mandatory to track the changes you make in your data. The compliance mandates tracking each of the changes made in transactions, capturing date of change, ensuring that edit log cannot be disabled or tampered with, operating with edit log facility throughout the year, preserving edit log as per requirement of record retention. Moreover, a chartered accountant needs to certify if the software used is compliant or not. TallyPrime Edit Log helps you comply with MCA's requirement in every way. Let us first see how to view edit log for transactions. In TallyPrime Edit Log, the facility to view edit log is provided for all vouchers entered in the data. You can drill down to the respective transaction from Daybook and then view edit log. Open Daybook, press Alt-G, type or select Daybook and press Enter. Press F2 to change the date if needed. Press Ctrl-B or click Basis of Value. Press Enter on Show Report for. This facility is provided in Daybook and other ledger voucher reports in TallyPrime Edit Log. As you can see, you can view Daybook for altered vouchers, non-altered vouchers, and all vouchers.
It may be possible that your auditor wants to view only the altered vouchers to view their alteration history. Let us view day book for only altered vouchers. If you do not want to view the deleted vouchers, then you can press Enter on Include Deleted Vouchers to set it as No. Now press Ctrl A to save the setting. As you can see, all the altered and deleted vouchers are displayed. Now move the cursor to the voucher for which you want to view edit log and press Enter. Press Alt Q to view edit log. As you can see, the versions are listed in descending order with details of activity that was performed by a user. Furthermore, the date and time at which the activity was performed is specified. Move the cursor to any version and press Enter. Let's say you want to view details of edit log for the latest version. Press Enter and the report Differences between edit log versions appears. You can view the older version on the left-hand side and the newer version on the right-hand side. This enables you to know the details of all the activities performed in the voucher. Now, press F12 and you can configure the report further. If you set Show Altered Values Only as Yes, then you will be able to view the alteration history of only values that were changed, such as party account, cost of an item, date, and others. Press Ctrl A to save the setting. You can now view the altered values in the report displayed in red text. Now, if you press F12 and set Show configuration-based values such as Yes or No and changes from or to empty fields as Yes, then you will view the changes related to F12 configurations of the voucher and other values selected by you. Set Show Related Values Updated by the System to Yes only if you want to view the internal fields that get updated by the application as a result of the alteration. Press Ctrl A to save the setting. If you had altered a particular configuration such as Provide Buyer's Details or Warn on Negative Stock Balance, then the report will display the same in red text. Press Page Down and Page Up to move between the pages of the report. Press Alt F5 to view the detailed report. You can also press Shift plus Enter on a line to view more details. Press plus key and the report will display older versions. If you press minus key, then the report will display the newer versions. Similarly, you can view edit log and the details of difference between the versions of any voucher in your data. Now, let us see how to view edit log for masters. In TallyPrime Edit Log, the facility to view edit log is provided for ledgers, stock items, and ledger or accounting groups. This is because alteration of only these masters have an impact on your financial data. You can drill down to the respective master from Chart of Accounts and then view edit log. You can also view the edit log from the master alteration screen. Press Alt G, type or select Chart of Accounts and press Enter. Let's open for ledgers. Press Ctrl B or click Basis of Values. Press Enter on Show Report For. This facility is provided in Chart of Accounts in TallyPrime Edit Log. As you can see, you can view Chart of Accounts for altered ledgers, non-altered ledgers, and all ledgers. You may want to view only the altered ledgers to view their alteration history. Let us view Chart of Accounts for only altered ledgers. If you do not want to view the deleted ledgers, then you can press Enter on Include Deleted Ledgers to set it to No. Press Ctrl A to save the setting.
As you can see, all the altered ledgers are displayed. Now, move the cursor to the ledger for which you want to view edit log and press enter. Press Alt-Q to view edit log. As you can see, the versions are listed in the descending order with details of activity that was performed by a specific user. Furthermore, the date and time at which the activity was performed is specified. Move the cursor to any version and press enter. Let's say you want to view details of edit log for the latest version. Press enter and the report differences between edit log versions appears. You can view the older version on the left hand side and the newer version on the right hand side. This enables you to know the details of all the activities performed in the ledger. Now, press F12 and you can configure the report further. If you set Show Altered Values Only as Yes, then you will be able to view the alteration history of only values that were changed, such as GST type, ledger state name, duty type, and others. Press Ctrl A to save the setting. You can now view the altered values in the report displayed in red text. Now, if you press F12 and set Show Configuration Based Values such as Yes or No and changes from or to empty fields as Yes, then you will view the changes related to F12 configurations of the ledger and other values selected by you. Set Show Related Values Updated by the System to Yes only if you want to view the internal fields that get updated by the application as a result of alteration. Press Ctrl A to save the setting. If you had altered a particular configuration such as Is Bill Wise On or Provide Credit Limit, then the report will display the same in red text. Press Page Down and Page Up to move between the pages of the report. Press Alt F5 to view the detailed report. You can also press Shift plus Enter on a line to view more details. Press plus key and the report will display older versions. If you press minus key, then the report will display the newer versions. Similarly, you can view edit log and the details of differences between the versions of any ledger, stock item, or accounting group in your data. Now, let's see how to view activities affecting edit log. In TallyPrime, you can view all the activities related to edit log. Press Alt-K or click Company. Go to Edit Log and press Enter. You can see all the activities such as migration of data on which edit log feature has an impact. The versions are listed in the descending order. Now, let us see how to implement security control for edit log. You may want to allow or disallow a set of persons to view edit log. For instance, you may want users with certain designations to create the voucher, but restrict them from viewing edit log. You can implement security control for the same. Press Alt-K or click Company, Security, and then press Enter. Set Control User Access to Company Data to Yes. Enter the username and password. Press Ctrl plus A to save. Now press Alt-K or click Company, User Roles, and press Enter. Consider that you want to disallow user from viewing edit logs. Under Disallow the following facilities, add the facility. For example, you want to disallow this user from accessing accounting vouchers. Select type of access based on your requirement. Consider you want to allow this user to create vouchers
but not view edit log. Under type of access, select display. Select vouchers from the list of reports. Press Ctrl A to save the setting. The user will not be able to view edit log for the vouchers. Similarly, you can implement other security controls as needed. As you saw, TallyPrime edit log helps you fulfill the requirement of MCA's audit trail compliance requirements. In this video, you will learn how to import masters and transactions to a company in TallyPrime. If you are creating a new company and have some set of ledgers or stock items created in another company, then you can just import those ledgers from that company and use them in the new company. There may also be a situation that some sales or purchase transactions were created in some other company and you want to import it to your company. You can do so easily in TallyPrime while saving a great deal of time, as you do not have to create those masters and transactions in the company. Let us first look at the prerequisites to import masters and transactions to a company in TallyPrime. TallyPrime allows you to import masters and transactions either from a company created in TallyPrime or those exported from other software. However, the masters and transactions exported from other software that you want to import to TallyPrime should be in Tally prescribed XML format. If you want to import XML data from any other software, then you can export some masters or transactions from TallyPrime to match the format of the files generated from the other software. If the formats match, then you can go ahead and import the data to the company in TallyPrime. You also need to ensure that the base currency and financial year of the source company from which the data was exported and the destination company to which you want to import the data is the same. It is also necessary that you set include dependent masters to yes while exporting masters or transactions. This ensures that if there are masters used in transactions that are not available in the destination company, then the masters also get imported along with the transactions and you can access the transactions seamlessly. Similarly, you may export a master which is dependent on another master. For example, a stock item which is a part of a stock group. In such cases, including dependent masters ensure that you can easily access the stock item. Before exporting or importing any set of masters or transactions, you should take a backup of the company. You can watch our video, How to Backup Company Data in TallyPrime. We also recommend you to note down the number of masters and transactions in a company before and after import so that you can tally the data. Now, let us import masters to the company data. Before importing masters to a company data, you will need to export the data from the source company. Open the source company. Press Alt-E for Export Masters. Press C to configure. In the Export Configuration screen, apply settings related to export. Under Type of Master, Ledgers is selected by default. Press Enter to select some other master that you want to export. Select the type of master and press Ctrl A to save. Now, set Include Dependent Masters to Yes. This ensures that if you are exporting a master dependent on some other master, for instance, a stock item that is a part of stock group, then the stock group will also be exported along with the stock item. Export closing balance as opening balance helps you when you follow a practice of creating separate companies for each financial year. At the end of the financial year, you can export the masters and choose to export closing balance as opening balance. As a result, the closing balance in the source company becomes the opening balance in the destination company of the new financial year. Enter the date against closing balance as applicable. File format has to be XML data interchange. Select Export to
and press enter. Say you want to export to a folder in your computer. Select local drive and press enter. Under folder path, specify path. Copy the folder path in your computer, paste it here and press enter. You can also select from drive. Press Ctrl A to save. Show more to further configure the export if needed. Ctrl A to save the export configurations. Press E to export. As you can see, the folder in your computer has opened where the file containing the masters is exported. Now, let us import the masters to a company. Shut the source company and open the destination company to which masters need to be imported. Press Alt-G, type or select statistics and press enter. You can see the number of masters and you can validate the numbers after import. Now press Alt-O for import masters. In the import master screen, select the file path where the data is located. Specify path by copying the file path and pasting it here. Select the file to import. If you have some masters in the company, then you can ignore duplicates. To update the opening balance, combine opening balances even if there are duplicate masters. Or you can modify with the new data later for the duplicate masters. For this instance, let's ignore duplicate masters and press enter. Now press Alt-G, type or select statistics and press enter. As you can see, masters have increased in numbers after import. Similarly, let's import transactions to a company. Open the source company. Press Alt-E for export transactions. Press C to configure. In the export configuration screen, apply settings related to export. Under type of voucher entries, all vouchers is selected by default. Press enter to select specific type of entries that you want to export. Let's say you want to export accounting entries only. Set include dependent masters to yes. If a master used in the transactions is not in the destination company, then it will get created in the destination company at the time of import. Select period and press enter. Enter the dates for the period during which transactions are recorded. Make selections for other configurations as needed. Specify the folder path. Select and press Ctrl A to save. Press E to export. As you can see, the folder in your computer has opened and the file containing the transactions is exported. Now, let us import the transactions to a company. Shut the source company and open the destination company to which transactions need to be imported. As a recommended practice, you should take a backup of the destination company before you go on to import the data. Press Alt-G, type or select statistics and press enter. You can see the number of transactions and you can validate the numbers after import. Now press Alt-O for import transactions. In the import transaction screen, select the file path where the data is located. Specify path by copying the file path and pasting it here. Select the file to import. Now press Alt-G, type or select statistics and press enter. As you can see, the transactions have increased in numbers after import. Now you may receive transactions of a previous financial period from your auditor after validation. In such a case, you will need to change the current period on Gateway of Tally in the destination company. Enter dates for the previous financial period and press Ctrl A to save. Thereafter, import the transactions. Once the transactions are imported, you can switch back to the running financial period. As you saw, importing masters or transactions to a TallyPrime company is a simple process that helps you add ledgers, stock items, stock groups, or any other master to a company.
Moreover, you can easily import transactions recorded in some other company. This saves you the time required in the manual creation of masters and transactions in a company, as you can use the already created masters and transactions after importing. In this video, you will learn how to view the e-waybill report and e-waybill register in TallyPrime. With the e-waybill report and register, you can get an overview of the transactions for which e-waybill activities are either completed or pending and then take action accordingly. Let's first view the e-waybill report. Press Alt-G, type or select e-waybill and press Enter. The e-waybill report opens. If the sections in the report do not show all the transactions recorded for e-waybill, then change the period. Press Alt F2, enter the from and to dates and press Enter. As you can see, more sections appeared after the period change. Now let's view each section. The Pending for Exchange with e-waybill System section enlists the transaction for which e-waybill is yet to be generated or cancelled. The first section under Pending for Exchange with e-waybill System is for e-waybill generation that contains the transactions for which e-waybill generation is pending. If the e-invoice is enabled in the company and there are transactions pending for IRN generation, the section would be Pending for Exchange with e-invoice e-waybill system. Under the section, there will be a section called For IRN Generation containing transactions for which e-invoice is yet to be generated. After successful IRN generation, those transactions will not be in this section. Under For e-waybill generation, you can also perform a range of actions using the right button bar. If you have generated e-waybill on the e-waybill system or any medium other than TallyPrime, but the transaction is still under Pending for Exchange with e-waybill system in TallyPrime, then you can select it and click Get e-waybill info or press F6. TallyPrime will exchange information with the e-waybill system provided you are logged in with your e-waybill credentials. Subsequently, the e-waybill information will get updated in TallyPrime and the transaction will move to the e-waybill generated section. Similarly, you can update Part B if the transporter changes or undo update Part B, update transporter ID, extend e-waybill and cancel e-waybill whenever required. If you do not want to generate e-waybill for a transaction, then you can use Exclude from e-waybill. You may need this facility when the party cancels the order or the transaction is not eligible for e-waybill, but the threshold value was mistakenly overridden during voucher creation. Click Exclude from e-waybill and press Y. It will then move to User Excluded Transactions in the e-waybill report. Similarly, you can drill down on the section for Part B updation that contains the transactions for which Part B needs to be updated. Now, press Escape and drill down on the For e-waybill extension section. You can click Extend e-waybill or press F9. Press Escape to get back to the report and drill down on For e-waybill cancellation. Here, you can click Cancel e-waybill or simply press F10. Press Escape and drill down on the Exported section that contains the transactions for which JSON files are generated either for e-invoicing or e-waybill. The section for e-waybill generation under Exported contains transactions for which JSON file was generated.
if you have uploaded the JSON file on the E-way bill system, then you can click Get E-way bill info or press F6 to update the transactions with the latest E-way bill information. Now press Escape and look at the sections under E-way bill generated containing the transactions for which E-way bill generation was successful. Drill down on with Part B and take necessary actions using the options on the right button bar, similarly to the other sections we discussed. Similarly, drill down on without Part B and then use Update Part B for Part B updation if needed. Press Escape to get back to the report. The transactions for which either E-way bill is cancelled or is marked as cancelled will be under the E-way bill cancelled section. You can open the E-way bill cancelled from E-way bill system that contains the transactions you had sent for cancellation and the cancellation was successful. The section marked as E-way bill cancelled contains the transactions for which you had cancelled the E-way bill either on the E-way bill system or any medium other than TallyPrime and then mark them as cancelled in TallyPrime. In both cases, you can press Alt F10 if the transaction has been wrongly marked as cancelled in TallyPrime. The action will undo cancellation and update the report in TallyPrime as the transactions will move to their previous state as applicable. After completing the necessary actions, press Escape to come back to the report. The section User Excluded Transactions contains the transactions that you had excluded for E-way bill generation because of order cancellation or other reasons. The E-way bill report has two more sections, namely Uncertain Transactions and Missing Invalid Information. Drill down on Uncertain Transactions and you will see number of vouchers with incomplete mismatch in information. As you can see, you will find subcategories under this section. Press Escape and drill down on a section under Missing Invalid Information. You can make corrections by drilling down further and save the updates, and the transaction will move to the Pending for Exchange with E-way bill system under For E-way bill Generation. Press Escape to get back to the report. Rejected by E-way bill system contains the transactions rejected by the E-way bill system either for generation or cancellation. Drill down on the section to know the reason for rejection. You can drill down further to view the voucher and make corrections to send for E-way bill generation again. And once E-way bill is generated for the transactions, they will start appearing in the E-way bill generated section under with Part B or without Part B as applicable. Now, let's have a look at the E-way bill register. In the E-way bill report, click E-way bill register or press F5. Instead of sections, as in the case of the E-way bill report, E-way bill register displays all the transactions in a particular period and their respective E-way bill status in a column. In the right button bar, the options provided are similar to those in the E-way bill report. Press space bar to select a transaction and click the relevant button for necessary action. For example, you have generated E-way bill for a transaction on the E-way bill system or any medium other than TallyPrime, and its status is pending for E-way bill generation, as you can see here. In such a case, click Get E-way bill information. TallyPrime will exchange the information with the E-way bill system and the status will get changed to E-way bill generated without Part B. And if you have also updated the information for Part B in the voucher, then the status will reflect as E-way bill generated with Part B. As you saw,
The e-way bill report and e-way bill register provide you with complete information about the transactions eligible for e-way bill. It helps you to take further actions so that the transactions appear in the appropriate sections and your books get updated. In this video, you will understand the simple process of cancelling the e-invoice using TallyPrime in just a few clicks. There may be situations in which the IRN is generated for a particular voucher, but you identify a need to cancel it. The voucher has a mistyped amount corresponding to an item, or the party may have cancelled the order. In such cases, you will need to cancel the e-invoice within 24 hours of IRN generation as per the regulation by NIC. TallyPrime enables you to cancel these e-invoices online or offline. Let us see the online process of e-invoice cancellation. Open e-invoice report. Press Alt-G and type or select e-invoice. Press Enter. Once the report is opened, drill down on the IRN generated from e-invoice system section. Select the voucher for which e-invoice needs to be cancelled. Click Cancel IRN or press F10. The e-invoice cancellation details screen will appear. Select the reason for cancellation and enter remarks, which is mandatory. Accept the screen and the voucher will move to the For IRN Cancellation section under Pending. Now let us send the e-invoice for cancellation. Click Exchange and then Send for e-invoicing. Click Send and then accept the screen. In this case, all the vouchers will be sent for cancellation. However, you can also select one or more transactions and then send them for cancellation. Enter your e-invoice login credentials and press Enter. Now, TallyPrime exchanges data with e-invoice system. Once the cancellation process is completed, there will be an exchange summary displayed in TallyPrime where you can see the e-invoices that are cancelled. As you can see in the e-invoice report, the voucher has moved to the IRN cancel from e-invoice system section. Even after cancellation, the information like QR code and IRN details will be retained in the voucher for your reference in TallyPrime. You can also see the remarks you had entered while cancellation using more details. This process helps in cancelling IRN on portal and books. However, to effect the financial reports, the voucher needs to be cancelled using key Alt X cancel voucher, as fresh invoice will be issued. If the e-invoice has already been cancelled using some other software or on the NIC portal directly, then you can choose the Ctrl F10 Mark as Cancelled button. The voucher will then move to the Marked as Cancelled section under IRN Cancelled and later cancel the voucher using Alt X Cancel Voucher. Now, let us look at the process of offline cancellation of e-invoice. You can cancel the voucher offline by uploading JSON file on the NIC portal. Drill down on the IRN generated from e-invoice system section. Select the voucher for which e-invoice needs to be cancelled. Click Cancel IRN, select the reason for cancellation and enter remarks, which is mandatory. Accept the screen. Click Exchange and then Send for e-invoicing. If you are unable to find your transaction in the list, press Ctrl B and press Enter on Include Exported Transactions to set it as Yes. Press Ctrl A to save. Select the voucher and click Offline Export. Accept the screen and the JSON file will be created for the voucher to be cancelled. You can go to the NIC portal and log in using your credentials. Click Bulk IRN Cancel. Browse the JSON file and upload.
the e-invoice will get cancelled. Now, when you open the e-invoice report in TallyPrime, you can see that the voucher is in the For IRN Cancellation section under Exported. Now you can click Get IRN Info. Accept the screen. Enter your NIC login details. Now the cancellation will be updated in TallyPrime and later cancel the voucher using alt text Cancel Voucher. As you saw, TallyPrime provides you with a hassle-free experience for online and offline cancellation of e-invoice. In this video, you will learn how to resolve when you are unable to export the data to MS Excel in TallyPrime. The error, unable to export, you need to add TallyPrime installation folder as a trusted location in your MS Excel, appears in TallyPrime while exporting data in the MS Excel format. When you are unable to export data to MS Excel, change the Trust Center settings in MS Excel to mark TallyPrime as safe to resolve the issue. Open MS Excel, go to File menu and click the Options tab. If you are not able to find the Options tab, then click on More and then the Options tab. Click Trust Center on the pop-up window that appears and click the Trust Center Settings button. Go to Trusted Locations and the Trusted Locations are available on the Path column. Then click Add New Location. Enter the path where TallyPrime has been installed in your computer. Select the checkbox Subfolders of this location are also trusted and click OK. Click OK in the Trust Center screen to save the setting. In this video, you will learn how to resolve when you are unable to export the data to MS Excel in TallyPrime. The error, unable to export, you need to add TallyPrime installation folder as a trusted location in your MS Excel, appears in TallyPrime while exporting data in the MS Excel format. When you are unable to export data to MS Excel, change the Trust Center settings in MS Excel to mark TallyPrime as safe to resolve the issue. Open MS Excel, go to File menu and click the Options tab. If you are not able to find the Options tab, then click on More and then the Options tab. Click Trust Center on the pop-up window that appears and click the Trust Center Settings button. Go to Trusted Locations and the Trusted Locations are available on the Path column. Then click Add New Location. Enter the path where TallyPrime has been installed in your computer. Select the checkbox Subfolders of this location are also trusted and click OK. Click OK in the Trust Center screen to save the settings. In this video, you will learn how to restrict users from saving or deleting views for reports for a company in TallyPrime. You may want only specific user roles in your organization to save or delete views for reports for a company, and therefore, restrict other user roles from the rights. Let's see how to do it. Open TallyPrime and load the company using admin username and password. Press Alt-K. Select User Roles. The Security Levels for Company screen will open. Let's say you want to allow everyone but the data entry operators to save or delete views. Press Enter on Data Entry. The Security Level screen appears. Set Allow to save report views for this company and Allow to delete saved views for this company to No. Press Ctrl-A to save the setting. Now, let's create an ID for a data entry operator. Press Alt-K. Select Users and Passwords and press Enter. Enter the required details and press Ctrl-A to save.
Now, log into the company using username and password of the data entry operator. Click Company, and then click Select or simply press Alt F3. Now, select the company from the drive. Enter the username and password. Now, let's try to delete a saved view. Open Sales Register. Click Change View. Bring the cursor to Delete Saved Views. The Delete Saved View screen appears. Bring the cursor to the view saved for this company and press Enter. TallyPrime displays an information screen that says No Access Allowed, which means that the user cannot delete the view as we had disabled the rights. Similarly, if you try to save a view, then TallyPrime will display the same screen. Click Save View or press Ctrl-L. The Save View screen appears. Set Show Additional Configuration to Yes. Under Save View 4, select this company. Now, let's try to save the view. Press Ctrl-A. TallyPrime displays No Access Allowed. However, if you select All Companies on this computer, then TallyPrime will allow to save the view as the restriction is applicable only for this company. As you saw, it is very simple to restrict user roles from saving or deleting views for reports in TallyPrime. These users will not be able to change the settings in any view saved for a company. However, they will be able to access views saved for that company. In this video, you will know keyboard shortcuts in TallyPrime that improve your efficiency at work. TallyPrime has a lot of keyboard shortcuts for transactions and reports that not only save your time while working on TallyPrime, but also make your experience better as you will be able to work without having to juggle between keyboard and mouse. For example, you can press Alt+C to create masters on the fly while recording a transaction. Press Ctrl+A to accept the screen and save a master, transaction, or configuration. Enter to drill down on a report to see further details. Escape to go back to the previous screen. Alt+2 to duplicate a voucher after selecting it in Daybook, any ledger voucher report where list of vouchers is displayed. Alt+I to insert a voucher. Alt+X to cancel a voucher. Alt+D to delete a transaction. Ctrl+N to use calculator, and other keys that make working with TallyPrime easier. To enable you develop a knack of using TallyPrime faster, TallyHelp brings to you a dedicated page for keyboard shortcuts. You can navigate to this page from any topic under TallyPrime product category in TallyHelp. Now, you can type the operation in the filter to know its shortcut key in TallyPrime. Let's say delete voucher. Now type capital D or small d on the search for shortcuts field. You can see that total 83 results are found and highlighted capital D or small d on the web page. Similarly, type small e, 29 results are found and DE are highlighted on the web page. Once you type the whole string, the filter provides a result of the action matching the string. Similarly, you can type other strings such as insert base currency. The filter provides the results. You can also type the shortcut key to understand its action. For example,
let's type Ctrl+R. You can refer to the action column to know about the role of the shortcut key in TallyPrime. As you saw, the keyboard shortcuts page on Tally Help is a ready reckoner that enhances your knowledge of TallyPrime and makes your journey with the product easier. इस वीडियो में आप TallyPrime में कंपनी डेटा को रिपेयर करने की आवश्यकता और रिपेयर करने की प्रक्रिया समझेंगे। चलिए देखते हैं आपको किन परिस्थितियों में कंपनी डेटा रिपेयर करने की आवश्यकता पड़े। आपको TallyPrime में डेटा रिपेयर करने की आवश्यकता कई कारणों से पड़ सकती है, जैसे कि सिस्टम क्रैश, डिस्क फेलियर, डेटा करप्शन या फिर कोई और कारण जिससे एरर्स आ सके। चलिए अब देखते हैं TallyPrime में कंपनी डेटा रिपेयर कैसे किया जाता है। रिपेयर करने से पहले कंपनी डेटा का बैकअप लेना सही रहेगा। अगर रिपेयर के बाद डेटा पुनः प्राप्त न हो पाए तो बैकअप आपको डेटा वापस पाने में सहायता करेगा। आप डेटा का बैकअप लेने की प्रक्रिया हमारे वीडियो से सीख सकते हैं। अब कंपनी डेटा को रिपेयर करने के लिए TallyPrime खोलकर F1 दबाएं, ट्रबल शूटिंग, रिपेयर चुनें। उस कंपनी डेटा को चुनें जिसे रिपेयर करना है। आप या तो डेटा के पाथ को स्पेसिफाई पाथ का उपयोग करके पेस्ट कर सकते हैं या सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव कर सकते हैं। कंपनी डेटा चुनें और एंटर दबाएं। यदि आपने डेटा का बैकअप लिया हुआ है तो बैकअप कंपनी डेटा बिफोर रिपेयर को नो सेट करें। अब R दबाएं और रिपेयर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले पड़ाव में TallyPrime पूरे डेटा और उसके रिपेयर होने की क्षमता की जांच करता है। दूसरे पड़ाव में मास्टरों एवं वाउचरों का वापस गठन होता है और तीसरे और आखिरी पड़ाव में डेटा को फिर से अनुक्रमानित किया जाता है, जिससे सारे टेबल्स एवं रिपोर्ट्स को प्राप्त किया जा सके। करप्ट डेटा जो प्राप्त नहीं हो पाया है वह टैली के फोल्डर में tally.rew फाइल में उपलब्ध होगा। टैली के फोल्डर को खोलें। tally.rew फाइल पर राइट क्लिक करें, एडिट विथ नोटपैड चुनें। जैसा कि आपने देखा, जो डेटा प्राप्त नहीं हो पाया था वह यहाँ उपलब्ध है। इन मास्टरों और वाउचरों को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको TallyPrime में वही डेटा फिर से एंटर करना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं एडवांस्ड रिपेयर कैसे होता है। आपको एरर ट्रेन MGR.900 या डीबग लोकेशन एरर जैसे एरर्स भी आ सकते हैं। इन मामलों में आपको उच्च रिपेयर की प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ेगा। उच्च रिपेयर के लिए Windows+R दबाएं। एप्लीकेशन के पथ को कॉपी करें। टैली एप्लीकेशन पर जाएं, राइट क्लिक करें, लोकेशन के सामने जो लिंक है उसे कॉपी करें और विंडोज रन में पेस्ट करें। एक स्पेस दें और कंपनी डेटा का पाथ दें, जैसे कि डी डेटा को क्वोट्स के बीच में डालें, फिर एक स्पेस दें और 0 एंटर करें। TallyPrime खुलेगा। उसके बाद भाग 2 में बताई हुई प्रक्रिया के अनुसार डेटा रिपेयर करें। जैसा कि आपने देखा, TallyPrime में आप मिनटों में डेटा रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप करप्ट हुए डेटा को पहचान सकते हैं और उन मास्टरों और वाउचरों को अपने कंपनी डेटा में दोबारा एंटर कर